Hi everyone, welcome to Primary Market Chatter brought to you by Sunday Investing. This is our October second week IPOs edition, where we talk about the IPOs which are going to come next week and try and review them from a fundamentals perspective. Today we'll be talking about three companies. There are a few SMEs as well, but none of them really seemed so interesting to catch our eye. There are three main boards which we'll be talking about, which are decent sized main boards. Two of them are like 1300 crore raises, and then one is 2600 crore raises. A raise. So we'll be covering those three and then kind of leave you with that. From my understanding, I haven't really read the companies at all, but from what I've spoken with Tanmay and Sachin, the companies are kind of complex. We'll probably start with Canara HSBC Life Insurance, then move to um Canara Robeco Asset Management, and then end with Rubicon Research. So that would be the agenda for the day. But before we actually get started, just want to highlight a couple of things. One, we are not SEBI registered research analyst. This is like none of what we say is a qualified opinion. Please do your own due diligence before taking any opinion, and only don't even take any of our opinions as what we are saying is true. Do your due diligence, like filter out if what we are saying is making sense or not, and open form your own opinion. आप अपना opinion खुद से बनाएं and do that, like do what you feel is the right thing. Second thing, we are on Instagram and on YouTube. मैंने Instagram का लिंक भी ऊपर स्पेस में पिन किया है अभी अभी, एंड YouTube का भी किया है. So if you have not followed us, go ahead and do that. We will be posting more on both these channels as well. This space also we'll record and post on YouTube. Third thing, I hope a lot of you have got LG allotment. Tell us in comments how much allotment did you get? Did you, or were you unlucky to not get allotment? I know Tanmay here was unlucky to not get allotment. I read his status. But yeah, I hope others have got allotment. Tell us in comments how much did you get in terms of allotment. Then with that, maybe what we can do is we can get started with Canara HSBC Life Insurance and then take it forward from there. So setting it up, incorporated in 2007, company एक private life insurance company है and is jointly promoted by Canara Bank and HSBC Insurance Asia Pacific. It has key business verticals of individual life insurance solutions, group insurance solutions, retirement and pension products, etc., which you would expect of any life insurance company. Setting up the IPO, it's a 518 crore raise. Oh, just give me 1 minute. I'm not 100% sure how big is the raise. Canara HSBC Life Insurance. It's a 2,518 crore raise at a market cap of 10,000 crores. I have written 518, so yeah, I got confused. It's a 2,500 raise at a market cap of 10,000 crores. So 25% का dilution है. All of it is a OFS. Company में primary raise कुछ भी नहीं है, OFS हो रहा है, which is understandable because I don't know how much money do they need, but yeah, 10,000 crores की MCAP है. FY25 के financials देखो तो 234 crores का revenue है और 116 crores का PAT है. 50% PAT margin. Like वो समझेंगे कैसे देखना है, but at least 116 crores का PAT है. Shouldn't be evaluated on a PE basis, but yeah, PE तो देखते भी नहीं इसलिए. LM की बात करूं तो LMs are SBI Capital, BNP Paribas, HSBC, JM Financial, and Motilal Oswal. So with that, over to you, Tanmay, to talk about Canara HSBC Life Insurance. Is my voice clear? Yeah. So Canara HSBC Life Insurance Company Limited is a joint venture between Canara Bank and HSBC Insurance. The company is a private life insurance company. The company is also the third largest insurer among the bank-led insurance companies. And it also has got 1.8% market share in terms of WPI in India. Now, I'll be talking on its business verticals. First would be the traditional ones and then would be product basis. It has got verticals like individual life insurance policies, which have got endowment, term and savings plans. It has got group insurance, which has got credit life policies and protection policies. It also has got retirement and pension funds.
pension schemes rather. It has also got government scheme in which the schemes like Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana has been taken care. It is also there in digital insurance and embedded insurance partnership. The 51% of its portfolio is into ULIP, and it has also got some rider insurance, which is for your accidental kind of claims. Uh, and again, like coming on its business model, the 92% of the company's revenue comes from bank assurance. So you need to understand what is bank assurance. The business which is generated from the partner banks. You know, uh, if you know, the Canara Bank is one of the largest, banking company in India, and also HSBC is second largest foreign bank in India. So, the banks cross sell or upsell the insurance, products to their customers. Now, what relevance this line has? So you just understand like a traditional insurance distribution model that an insurance company comes, it has got its own distributors, other partners. Then those partners pitch it to either sub partners or direct to the consumers or customers, whatever. There are two different words, but like taking it at a high level. So the consumers or customers take the policies from that partner, and then partner is either to the higher partner directly to the company. So the commission that partner gets something out of the premiums the insurance company earns. So in terms of bank assurance, what happens is the banking partners charge significantly lower commission than your traditional partners or channels or whatever you want to say. So the cost of acquisition for the customer is less, the cost of business is less, and the quality of customer is better, given being due to the customer having its bank account in the specified banks, be it Canara, be it HSBC, or it has also got, I guess, Dhanlakshmi Bank ke saath bhi inka partnership, and there are some 17 RRBs, rural regional rural banks. So this company, the Canara HSBC has already got the data of this customer. So first is the cost of acquisition is lower. The contribution margin rather is lower, and the customer is rather better. Like you are not picking any random thing. 92% is from bank insurance, so you know the customer profile of that policy holder. Now, one more thing is कि 92% में से 70 to 73% comes from your Canara Bank, 19 to 20% comes from HSBC. This is FY25 का number, and rest 8% के अंदर आपका ये आ गया एजेंसी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी उसमें से आ गया, डिजिटल आ गया. दिस वन मोर गुड थिंग इज ये आर्मी और डिफेंस में भी बहुत इनका अच्छा है, तो वो उनके सोल्जर्स के भी इंश्योरेंस पे काम करता है. अकाउंट फॉर लाइक 3-4% ऑफ द रेवेन्यू, आई गेस 2-3% टाइप्स. और डायरेक्ट इनका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. सो दिस इज टूवर्ड्स द हाई लेवल ऑफ द कंपनी. अभी मैं इनका थोड़ा आपको की मैट्रिक्स बता देता हूँ. AUM asset under management stands at 43,600 crores as on June 31st, 2025. The EV. So EV has got two meanings. One is your normal enterprise value, which we talk for normal companies. But in insurance, it is embedded value. ठीक है, इसको EV भी बोलते हैं. EV like EV का दोनों मतलब हो गया, but here it is embedded value. That stands at 6,353 crores. ULIP accounts for 51%. Unit linked insurance policies account for 50%. So ULIP, everyone knows that it is like investment plus insurance का combination होता है mostly. That accounts for 51% of the portfolio of the whole company. Non-participating policies include 20%. Non-participating uh, एक मिनट. So the annuity is at 13%, and the VNB margins, a value of new business stands at 19.5%, which is like a bit lower than peers. इसके अंदर एक और चीज ये भी है कि इनका जो what you can say, the products are relatively cheaper than the private insurers, तो इनका VNB margin भी हो गया, and also the distribution has got lower cost, तो वो blended level पे 19.5% is a bit lesser than the peers. इसके बाद अगर आप देखोगे तो उनका सॉल्वेंसी रेशियो इज एट 200%, विच इज 50% मोर देन योर गाइडलाइन फ्रॉम IRDAI, विच इज एट 150%, उनसे ज्यादा है. फिर वन मोर पॉइंट आई सॉ विच वाज लाइक इंटरेस्टिंग रादर ऑन नेगेटिव एंड, कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अपॉन GWP एज अ परसेंटेज कितना है.
तो इफ यू लुक एट पियर्स, तो वो 9% से लेके 13% के आसपास है, 9 से लेके 11% के आसपास है. दिस गाइस आर 12.4%. सो दिस आई एम कंपेयरिंग विथ योर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई एंड एचडीएफसी. सो द मैनेजमेंट क्लेम्स कि हमारा कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन is rather low. They might be right also, but the other players are at lower cost than Canara HSBC. The reason primarily should be the scale also. These three companies are extremely larger than very, very like big in terms of multiples than Canara HSBC. So eventually, after some, after a particular scale, this should come down to like 9%, 10% eventually. ये हो गया. उसके बाद नाउ कमिंग ऑन इट्स फाइनेंशियल्स. सो इधर रेवेन्यू नहीं आता है आपका, प्रीमियम्स आता है, नेट प्रीमियम्स. इन FY23 द कंपनी डिड नेट प्रीमियम ऑफ 7,197 crores and PAT of 91 crores. 24 में प्रीमियम्स डिक्रीज by 1% to 7,129 crores and PAT at 113 crores. FY25 में 12.5% का प्रीमियम ग्रोथ था at 8,027 crores and PAT was at 150 crores. But in Q1, the numbers have, went very better. Q1 में the premiums have shot to 1,747 crore, which was 25.8% YOY growth. मतलब Q1 FY26 versus Q1 FY25. Q1 FY25. The PAT was at 23.4 crore. So yes, 25.8% पूरे साल के लिए ब्लेंडेड लेवल पे ग्रोथ होगा कि नहीं, देयर आर सम डाउट्स एंड पर्सनली फील नहीं होगा. अभी इनका वैल्यूएशन पे आता हूँ मैं, वैल्यूएशन पार्ट पे. सो 10,070 करोड़ का वैल्यूएशन है. आप इसको पी पे देख ही नहीं सकते हो, बिकॉज एक पी का सेंस ही नहीं बनता है. अभी इसके दो मल्टीपल्स है इंश्योरेंस में जो मैं पर्सनली एटलीस्ट फॉलो करता हूँ. फर्स्ट इज मार्केट कैप अपॉन एम्बेडेड वैल्यू और प्राइस टू बुक. सो मैं आपको दोनों का थोड़ा बता दूंगा. प्राइस मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू, कैनरा एचएसबीसी का स्टैंड होता है 1.6 टाइम्स पे. ठीक है, 1.6 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल अपॉन मार्केट कैप. तो LIC जो है विच इज द टॉप इंश्योर स्टैंडर्ड 0.5. ठीक है, बट उसका अपना एक अलग रीजन है वो इतना सस्ता क्यों है. इफ यू लुक एट पियर्स, HDFC लाइफ इज एट 2.8 टाइम्स, SBI is at 2.4 times and ICICI Lombard is at 1.8 times. तो एवरेज पे 2.2 2.3 टाइम्स होता है, ये 1.6 पे. बट इसके अंदर ये भी है ना, द बैंक एश्योरेंस इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर all these companies is slightly lower, and those are most, what do you say, consumer facing insurance companies. Like if you talk to a normal consumer, he might know SBI, he might know HDFC, he might know ICICI Lombard, but Canara HSBC बहुत कम लोग जानते हैं. So that is a different matter altogether. अभी इनका प्राइस टू बुक पे मैं देखूं तो कैनरा एचएसबीसी इज कमिंग एट 6.6 टाइम्स प्राइस टू बुक. ओके, एंड FY26 पे मैं आपको डाइल्यूट करके बताऊंगा तो 6.2 टाइम्स है. ठीक है, सो दिस इज फॉर एनुअलाइज बेसिस. एंड इसके अंदर कोई नया कैपिटल नहीं आ रहा है. कंप्लीट आईपीओ इज एन ऑफर फॉर सेल. सो इसके अंदर कोई नई इक्विटी नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं हो रही. सो दिस इज योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का ही मैं आपको FY26 एनुअलाइज बता रहा हूँ. दैट इज एट 6.2 टाइम्स प्राइस टू बुक. If you look at peers, SBI is at 10.5 times FY25, HDFC is at 8.5 times and ICICI Prudential is at 7.7 times exact. अगर आप इनका FY26 देखो तो SBI आएगा अराउंड 9.2 टाइम्स, HDFC आएगा अप्रॉक्स 7.8 टाइम्स एंड ICICI आ जाएगा अराउंड 6.2 टाइम्स. तो मैं कहूंगा 10-20% का ब्लेंडेड लेवल पे उन्होंने जगह छोड़ी है. सो कमिंग ऑन द एंकर बुक वाज लाइक बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन. अच्छी थी एंकर बुक. तो अभी इसका मैं एकदम आपको बॉटम लाइन बता देता हूँ. केस में लिस्टिंग बनेंगे, आई फील नो, नहीं बनने चाहिए. इंश्योरेंस इंडीड इज अ वेरी लॉन्ग टर्मिश काइंड ऑफ अ बिजनेस. सो द पीपल हैविंग, द इन्वेस्टर्स हैविंग अ व्यू ऑफ मोर देन अ ईयर, लाइक 1 से 3 साल आपका व्यू होना चाहिए टू होल्ड इट इन योर पोर्टफोलियो. तभी इसके अंदर आपका पैसा बन सकता है. व्हाट माय पर्सनल व्यू इज. यस आई नो 12 महीने के अंदर आपका 20% तो बिल्कुल बन ही सकता है, बट I as an investor don't like those 20% return in insurance kind of a business. So, like आज तक in my portfolio, I haven't kept any insurance company except Go Digit, where I was very bullish last year. So Go Digit के अलावा आज तक मैंने कोई insurance नहीं. So I'm not a investor who likes insurance companies in its portfolio. So I would personally not be applying. लिस्टिंग इसमें बनेंगे क्या नहीं, आई डाउट. कंपनी ने प्राइसिंग ठीक रखी है, और सस्ता हो सकता, क्या हो सकता था, बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो. इसके अंदर एक और चीज ये भी है कि एक्सेप्ट, सो कैनरा ओन्स 51%, HSBC ओन्स 26%, और बाकी का जो 23% है दैट वाज विद पंजाब नेशनल बैंक. एंड दीज गाइस आर डाइल्यूटिंग 11%, PNB is diluting, HSBC is diluting only 0.5%,
और बाकी का जो 5-6% है वो अपना कैनरा रोबेको डाइल्यूट कर रहा है 5.5% टाइप्स। तो शायद इवेंचुअली पीएनबी माइट डाइल्यूट मोर एंड दैट इज वेरी प्रॉपर। उन्होंने 2016-17 में इन्वेस्ट करा हुआ था, सो दैट इज फेयर ऑल्सो। सो ये एक सप्लाई का एक छोटा सा कंसर्न है। वो लीगल लेवल पे तो इंश्योरेंस कंपनी को तो बहुत ही चीजें, ऑल्सो डिस्कसिंग दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस। सो ओवरऑल प्रॉपर लॉन्ग टर्म का ही स्टॉक है। मुझे शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन्स पे कोई मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। जिनका भी वो 2 साल 3 साल 1.5 साल का है उन्होंने ही इसको इवेल्युएट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। Got it. Thank you, Tanmay. Just to reiterate, can you repeat कि peers कहाँ पे है? On which metric do you think we should evaluate it at? P by embedded value or मार्केट like what do you मार्केट think is वैल्यू a अपॉन better एम्बेडेड वैल्यू एक है और दूसरा प्राइस टू बुक है। price to book तो छोड़ देते हैं. Insurance embedded value, right? Like करेक्ट and करेक्ट। ये कहाँ पे है and peers कहाँ पे? And पियर्स you ओके, are सो saying that this could एक मिनट ideally आई be at a जस्ट रीड आउट। discount also to peers. हाँ हाँ, तो हल्का सा है। सो मार्केट कैप टू ईवी एट FY25, हाँ, मतलब कोई एनुअलाइजेशन नहीं, इट इज एट वन Hmm. पॉइंट सिक्स टाइम्स ठीक है, 1.6 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू टू मार्केट कैप। उसके बाद अगर मैं LIC देखूं, विच इज योर टॉप इंश्योरेंस, स्टैंड एट 0.5%, बट उसका सस्ता होने का एक अपना अलग रीजन है। सो टॉकिंग ऑन एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, HDFC इज एट 2.8 टाइम्स, SBI इज एट 2.4 टाइम्स एंड ICICI इज एट 1.8 टाइम्स। ब्लेंडेड पे 2.3 का एवरेज है। दिस इज कमिंग एट नहीं 1.6। LIC का दो उसको LIC का दो हाँ, मैं वो उसको सरकारी नहीं नहीं, मैंने सरकारी आपको वाला जो 3 का एवरेज बताया LIC को निकाल के ही बोला। LIC का कितना है जितना LIC पॉइंट का फाइव उतना इसका होना चाहिए उससे पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइव अच्छा इसका ओके 1.6 ठीक है है यार। वो मत अरे गलत हो समझ जाएगा, गए नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा। got it yeah but yeah again insurance is not a sector it's at least for us high growth मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैंने investors मेरे make 5 साल में खाली गो डिजिट में मैंने पैसे लगाए और मैंने किधर भी मैं गया नहीं हूँ इंश्योरेंस के लिए। लाइक आई डोंट लाइक दैट एज अ सेक्टर, और जो पैसे भी नहीं बनते यार। लाइक आप पिछले 20 साल का इतिहास निकाल लो, द बेस्ट लिस्टिंग टिल डेट हैज बिन 3%, 4% प्रीमियम, दैट वाज गो डिजिट। उसके अलावा सबका माइनस ही होता है लिस्टिंग। इवन स्टार हेल्थ का नीचे हुआ था यार, वो तो इतनी हॉट कंपनी हुई थी 2022-23 में, मेरे को याद है, स्टिल दैट वाज एट डिस्काउंट। सो लिस्टिंग से भी तो इन्वेस्टर्स में नहीं लगाना चाहिए, व्हाट माइंड। got it yeah that was with respect to Canara HSBC Life Insurance moving forward and moving to the second company now before that just want to highlight if you haven't joined us on Instagram and on YouTube please go ahead and do that मैंने ऊपर लिंक डाला हुआ है इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का भी we'll be posting our this space later on our YouTube as well if you haven't joined. The next company we'll be talking about is Canara Robeco Asset Management. Setting up the company incorporated in 1993. Company is an asset management firm in India, serving as the investment manager for Canada Robeco Mutual Fund. It operates a JV between Canara Bank and Oryx Corporation Europe. So basically एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और स्पॉन्सर है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है फॉर द कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड। तो जो भी म्यूचुअल फंड से कमाई होती है वो इनकी इनकम होती होगी एंड ये भी एक जेबी है बिटवीन कैनेरा बैंक एंड अनदर और एक्स एमएनसी कॉर्पोरेशन। नीचे वगैरह का या another MNC setting up the company again 1300 crores का IPO all of which is a fresh OFS सब कुछ OFS है no fresh capital going into the company एम कैप 5300 करोड़ का है 5300 करोड़ पे 1300 करोड़ का डायल्यूशन है 25% का। FY25 फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रेवेन्यू 400 करोड़ का है बॉटम लाइन 190 करोड़ की है बिकॉज देयर जस्ट सो मच operational leverage in this business that they are able to generate 50% PAT which is great but I don't know how to value this company. It will be interesting to listen to Sachin to understand how to value it. In terms of the LM is SBI Capital, Axis, and JM Financial. So over to you, Sachin, to talk about Canara Robeco Asset Management. Am I audible? Yep. All right. So this Canara Robeco Asset Management, they were established way back in 1993, and in the times of 2007 to 8, they formed this joint venture between Canara Bank, which owns this 51% stake, and Robeco. तो रोबेको पहले एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी थी, which was then later acquired by this Oryx Corporation from Japan, and then Robeco was renamed to Oryx Corporation Europe. So that holds 49% stake in this company, and Canara Bank, which is a PSU, which that holds 51% stake.
So earlier, around that 2008 to 10 period only, they had around 80% plus schemes in the debt portion. They offered debt instruments and all sorts of debt instruments were part of their schemes. But later on, they switched to these equity schemes for more higher returns and even appealing to this low retail traders, low retail investment options. Now currently in the current state, the revenue is primarily from this management fees, which is 90 to 90% of the total revenues, which is charged on the AUM that this company handles, which is roughly around 1 to 2% for the equity schemes. And they also have some debt schemes, so the percentage of management fees charged for those debt schemes is lower than the equity schemes. And all of the rest revenues, 8% of the rest revenues comes from this advisory fees from the Robeco group from Japan and Europe. And now coming to their asset under management on a quarterly basis, which is a better metric to track, that grew from around 62,500 crores in FY23 to around 1,03,000 crores in FY25. Now, majorly they are handling the equity portion more because 90% of their schemes, 90% of their AUM is into this equity schemes only. And especially for their equity AUM, which saw a growth of around 40% year on year until FY25. And this has made this Canada Robeco among the fastest to grow in this equity only AUM. And they hold a good market share in equity only, around 2.5 to 3% market share compared to the other AMCs that are in the market. Now, the number of schemes that they have is currently around 26 to 27 schemes, among which 12 are equity schemes, 10 are debt, and 4 are hybrid schemes. They have a good network of from Canara Bank that they use. Around 8% of their distribution of all of these mutual fund products are done by these Canara Bank branches, 10,000 plus branches. And apart from this, they have around 52,000 plus distributors as well in India across various cities and union territories. So that is their prime focus for distribution. And they mostly target top 30 cities and some cities after top 30. So that is their primary target. Now, coming to their financials, in FY23, they did 204 CR of revenues with near 80 CR of PAT. And the AUM, the quarterly AUM in year this time was around 63,000 crores. In FY24, the revenues jumped to 278 CR with 150 CR of PAT. And the AUM reached near 85,000 crores. In FY25, the revenues again jumped to 404 CR with 190 CR of PAT. And the AUM by March 31st was near 1,03,000 crores. They also have given some financials for June 30, June 30 of this, quarter one of FY26. Now, where the revenues are near 121 CR with 60 CR of PAT. And the AUM has already crossed 1,11,000 crores. So मंथली SIP को हम देखेंगे जो अभी 29,000 to 30,000 crores चल रही है. So that should help sustain this AUM growth of 20 to 21% for this Canara Robeco. And based on that only the FY26 projections and will materialize. Now coming to some positives for this company, equity only AUM has been their strong growth driver, and among that only the retail and HNI segment contributes around 87% of the total AUM of that 1,03,000 crore figure. And usme bhi around 51 lakh folios, they have different folios, around 51 lakh folios are present, and that is dominated by this 87% of retail and HNI participants. Their fund performance has been decent. If we take a longer term horizon of 10 plus years, or most of their fund schemes have beaten the benchmark. But if we reduce that 10-year timeline to a smaller timeline, then we see that the Canara schemes are not doing very great. And this is despite Canara having a 90% plus exposure into equity schemes, whereas the other AMCs like HDFC, Nippon have around 50 to 60% exposure to equity schemes. Still, their fund performance is not good in a shorter timeline. Also, they have now started to build more digital initiatives for faster onboarding of clients and to attract the more newer generations of investors. So that should help in the increase in AUM.
Also, one particular thing to note is from the debt schemes that they offer, they do not offer money market schemes. So money market क्या है, एक छोटे instruments होते हैं within 1 year maturity timeline. So they do not offer this because the expense ratio, which is inherently an income for these AMC companies, वो उसमें बहुत कम होता है money market schemes में. So it's a good thing that they do not offer these money market schemes as part of their debt funds. Also, Oryx Corporation is a Japan-based conglomerate, so they already have global investment expertise, so that is an added advantage. Now coming to the risk, the market share is very minimal currently, around 1.5 to 1.6% only, and there are already giants present like HDFC, Nippon, Aditya Birla, UTI as well, and mostly all of these hold near 8 to 10% market share individually. Also, for the direct distribution of their products, which is very less, and they rely almost 75 to 80% on third-party distribution. So third-party distribution में there are higher costs for distribution, and then the impact on margins is also visible. Also, since their schemes are largely equity dominated, so अगर equity में swing आएगा, be it up or be it down, so that can lead to fluctuations in their schemes. And अगर downturn swing आया, तो we can see more withdrawals as well. Also, the management is saying that we are now also going for newer plans into debt schemes as well. But we already see that 9 out of 10 debt schemes that this Canara Robeco is having, they are underperforming already. So I do not see any sense to go more into debt schemes. Maybe something will materialize later, but let's see. There is one GST demand of around 480 crores, which is for the period from FY18 to FY23. So that is still in appeal stage. Nothing materialized yet, but that is in appeal stage. Also, there are talks that going forward, ये जो Canara Robeco का brand name है, that will go some change. The name will change, and then the scheme names and all sorts of name change will go. Nothing major, but just a point to note down. Now, coming to the IPO price, promoters here are diluting near 25%. 13% is dilution by Canara Bank, and the Oryx is diluting 12%. So, on terms of IPO pricing, it's near 27 times FY25. And given the AUM growth, if we project near 20 to 21, it's near 20 to 21 times FY26 and below 20 times FY27 if we maintain the same profitability also. Now, in terms of peers, HDFC and Nippon, they are way ahead of this Canara Robeco. HDFC commands more than 5 times AUM of this Canara, around 7 lakh plus 7 lakh crores plus AUM for HDFC, and Nippon is also around 4.5 lakh to 5 lakh crores of AUM. So there are much bigger and better players, and that both of these players trade near 40 times, above 40 times only. Then we have other AMC companies like Aditya Birla and UTI, which have similar margins like this Canara Robeco, and they trade near 23 to 24 times. Industry average peer is near 30 to 31 times only. So that is likely higher because of this HDFC and Nippon in the mix. Also, a better metric to track these AMC companies is the metric of market cap to total average AUM. So इसमें क्या है कि जो भी मतलब अभी करंटली उस कंपनी का कितना मार्केट कैप उसके AUM का कितने परसेंटेज है, तो इसमें हम देखें तो HDFC commands around 14% of market cap of its total AUM, 14 to 15%. Nippon commands 10%. Aditya and UTI both command near 6%. And this Canara Robeco is coming lower at around 4.8 to 5% of that market cap to total average AUM metric. So coming at lower end, given the scale of AUM and margins as well. Now for the anchor list, decent to good anchors, mutual funds and insurance companies were visible. DSP was there, SBI, Nippon, ICICI Prudential, Bajaj Allianz, HSBC and Kotak, all sorts of mutual funds and insurance companies were there. For the final thing, I think that valuation wise, it's priced decent to good, given their AUM size and the returns that they are commanding. Also, they are getting benefited by the faster growth in equity only AUM. And we see that the mutual fund industry is getting a higher push, and it is further expected to grow around 2 to 2.5 times from here in the upcoming years. So visibility for the business is there, but that also means that newer players will come in and launch their own mutual funds and new schemes. So that is one thing to watch out for. Still, I'm not expecting gains outright on the listing only, but
seeing the valuation comfort to some extent, I will personally be inclined to apply. That's all. Oh, you'll be applying. Interesting. I would not apply to. I don't understand this company. I don't see why this will be around after 5, 10, 12 years. Like again, like मेरे को business paid out है यार. मतलब comparatively, they underperform the market and it's a annuity income चले आ रही है, but I I don't like this business at all. Like again, personal bias. Feel there should be better products for people to take than to take these products. But I will not be applying. Or even if I apply, it will only be for the sole Minimal. intent of listing gain if there is any. And then I don't want this company in my portfolio. This gives all indications of a laggard. लगाट तो है, मतलब दे आर ट्राइंग टू स्केल अप. अब कितना मटेरियलाइज होता है, लेट्स सी. Let's see. I have a lot of bias. Like मेरा एक I क्वेश्चन है यार. account was in Canada. राइट. ये यूटीआई का और निप्पॉन का योर एयूएम टू मार्केट कैप क्या है? यूटीआई इज नियर 6% और आदित्य एएमसी भी 6% के आसपास है. निपॉन का अराउंड 10% है मार्केट कैप टू एईएम. गॉट इट. और जो मुझे पता है, एक्सेप्ट एचडीएफसी, सभी ने आईपीओ के बाद रिटर्न्स खराब ही दिए, इज व्हाट आई नो, टॉप ऑफ माइंड. हाँ, निपॉन में वो स्मॉल कैप फंड इज No, I'm talking about IPO अपना plain stock market. हाँ, प्लेन कंपनी स्टॉक. का रिटर्न, हाँ कंपनी का रिटर्न आफ्टर ओनली एचडीएफसी. बाकी मुझे तो याद है यार, लाइक फॉर 3.5 years आदित्य बिरला वाज बिलो आईपीओ प्राइस. अभी आई गेस आईपीओ प्राइस पे ऊपर, अभी भी ओएफएस हो गया रिसेंटली उसमें. यूटीआई में तो यूटीआई तो अलग ही कहानी, छोड़ो यूटीआई तो छोड़ देते हैं, उसके अंदर 2-3 बड़े इवेंट्स आ गए. ठीक है, इसमें भी होता रहेगा ना ओएफएस बाद में, लाइक चांस तो है ही, राइट? कंपैरेटिवली लेसर है देन 75% तो ऑलरेडी है, मतलब हाँ मिनिमम पब्लिक तो. लाइक आदित्य बिरला का 75 से ऊपर थ्रेशोल्ड से उनको करना पड़ा था. Like ideally, don't see Orixen and Canara doing more OFS. Understood. But yeah, but not very excited about this business at all. With that, moving forward and talking about the third company. The third company we'll be covering is Rubicon Research. Incorporated in 1999, company is a pharma company engaged in the development, manufacturing, and commercialization of differentiated formulations, and has a portfolio of 72 active new drug applications approved by US FDA. So pharma की company है. Tanmay will be covering the company when he covers, but at least at a high level, this is what it seems like. थोड़ी सी एंथम फार्मा की याद आ रही है मेरे को तो जब when I'm reading about it. But yeah, you cover when you actually talk about the business model. Setting up the IPO, it's a 1300 crore IPO. 1378. 500 करोड़ का फ्रेश इशू है, 800 850 करोड़ का ओएफएस है. एम कैप जिस पे कंपनी आ रही है वो 8000 करोड़ है. तो 8000 करोड़ पे 1300 का डाइल्यूशन, 15% डाइल्यूशन. FY25 फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 1296 करोड़ का टॉप लाइन है, 134 करोड़ का पैट है. इट्स कमिंग एट लाइक लेट्स से 650p, something like that. In terms of the LM is Axis, IAFL, JM, SBI, Capital. So over to Tanmay to talk about Rubicon Research. I'll tell you this is going to be one of the most thorough, and everyone should listen it very carefully. So Rubicon Research Limited is an research and R&D driven, innovation focused pharmaceutical formulations company with complete focus towards regulated markets, particularly the United States. So इनका 99%, 98.5% रेवेन्यू आता है यूनाइटेड स्टेट्स से. ठीक है. Rubicon is the only Indian company with complete focus on the regulated market. So percentage of revenue towards regulated markets इनका इंडिया में highest है, and they're the sole company which has got complete focus over those markets. इनका मैं आपको थोड़ा पोर्टफोलियो बता देता हूँ. मतलब पहले इनके पास क्या क्या, इनका थोड़ा मेट्रिक्स बता दूंगा, फिर पोर्टफोलियो बता दूंगा, देन मैं इनके आपको ये बता दूंगा सब सेक्टर्स की किस किस में प्रेजेंट है. सो दिस गाइज हैव गॉट 72 एक्टिव ANDA अप्रूवल्स. ANDA क्या होता है? एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन. तो एक अप्रूवल लेने पड़ते फ्रॉम द FDA.
So out of which like 72 AND approvals and 9 are ND approvals, new drug approvals. इनके as on 30th June 2025 81 products है. The company is India's fastest growing pharmaceutical company, and the growth has been 7 times higher than the average of top 10 companies. जो 11-11.5% है इनके सामने, this company has grown at 76% CAGR for last 3 years. In terms of number of A&D approvals, the company is India's one of the top 12 pharmaceutical companies. इनका product portfolio है oral capsules, concentrates, solutions, suspensions, syrups, tablets, ophthalmic drops, sprays. अभी इनका मैं आपको सब ये बता दूंगा, सब सेक्टर्स बता दूंगा जिन जिन में इनका पोर्टफोलियो प्रेजेंट है. 25 से 27% इनका जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम पेन मैनेजमेंट. बाकी सीवीएस है, सीएनएस है, हाइपोकलेमिया है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है. उसके बाद एनआरटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल. उसके बाद मेटाबॉलिक है एंड इम्यूनोसप्रेंट्स. देन और कुछ है, एंटी सप्रेशन वगैरह है, और 2-3 चीजें है. सो इफ यू जस्ट लुक एट, ये आपका टिपिकल जेनरिक फार्मा का पोर्टफोलियो नहीं है. दिस इज मोर इनटू कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थेरेपीज. अभी इनका अगर मैं देखूं तो दिस गाइज हैव गॉट 3 फैसिलिटीज. सो उसमें से 2 फैसिलिटीज वेयर टिल FY25 बोथ आर USFD अप्रूव्ड. आपको एक छोटी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जिनको पिछले 10 साल से ज्यादा में कोई भी USFDA का ऑब्जर्वेशन नहीं है, विच इज एन एक्सट्रीमली बिग अचीवमेंट एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो इनके मतलब यार सुनो, आप 2014 के बाद आपको यूएसएफडी ने कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं मारे. दिस इज लाइक बिग अचीवमेंट, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट. नहीं तो उनका आदत है आने का बजा के जाने का, लाइक इट हैज बीन वेरी कॉमन विद आर निफ्टी कंपनी, फार्मा कंपनीज और मिड कैप, स्मॉल कैप, जो मर्जी बोल लो, बड़ा दिक्कत होती है यूएसएफडी से. In June 2025, the company has acquired one facility from Alkem Laboratories, which was in Pithampur. That is also USFD approved since 2013, और उसके अंदर भी पिछले 12 साल से कोई भी एक्शन लिया गया नहीं है. So this facility should add the further growth coming in the coming years. उसके बाद इनका एक और छोटा सा ये है कि दिस गाइज हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड फॉर्मुलेशंस. सो क्या करते हैं इसके अंदर है, डिलेड एंड एक्सटेंडेड टैबलेट्स एंड ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशंस को एक नेसल स्प्रे में दिस गाइज मेक, विच इज लाइक कॉम्प्लेक्स इन नेचर. उनको आई गेस मई या जून 25 में इसका भी इनको एनडी अप्रूवल फ्रॉम द यूएसएफडीए मिल चुका है. दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट. एंड इनका देखो तो 35% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स. तो स्पेशलाइज का इन्होंने मीनिंग क्या दिया है, वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स लाइक अदर फार्मा कंपनीज. फ्रॉम द डे वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट, वी डोंट हैव मोर देन 2 कंपीटिटर्स. दिस इज द फर्स्ट. और सेकंड इज, हमारा उस प्रोडक्ट में 25% से ज्यादा मार्केट शेयर. सो 10 ऑफ इट्स फॉर्मुलेशंस हैव गॉट 25% प्लस मार्केट शेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद अभी इनका मैं आपको बिजनेस मॉडल बता देता हूँ. ये सब समझ के, बिजनेस मॉडल पर ने बात नहीं करी. सो दिस इज अ एंड टू एंड सोल्यूशन कंपनी. सो एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ, R&D खुद करेगी, डेवलपमेंट खुद करेगी, मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगी, सप्लाई खुद करेगी, मार्केटिंग खुद करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेगी. सो ये अपने ही नाम से बेचता है, किसी और के लिए नहीं बनाता है. R&D भी खुद करता है, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा पार्ट इनका यूएस के सीडीएमओस बना के देते हैं, बट दैट इज अ स्मॉल, आई गेस हाई सिंगल डिजिट परसेंटेज. बाकी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ठीक है. एंड इफ यू जस्ट लुक एट one good thing is कि इनका R&D as a percent of the revenue is highest in the industry, almost double than the average of the industry. So 10%, and in 2023 it used to be 18% of its revenue was R&D expenditure. ठीक है. अभी दिस कंपनी इज ऑल्सो नोन फॉर डूइंग वेरी ग्रेट एक्विजिशन. आज तक इन्होंने 4 या 5 कंपनी एक्वायर करी, ऑल वेर कैपेबिलिटी बेस्ड. अभी इनका मार्केटिंग और प्रमोशंस में ऑल्सो दिस कंपनी हैज एक्वायर्ड वन कंपनी कॉल्ड एज वैलिडस, विच इज इन न्यू जर्सी, यूएसए, which is a specialized company into marketing of brand image formulations companies in the US and the regulated markets. अभी इनका आप देखो तो आईपीओ साइज इनका 1377.5 करोड़ से 500 करोड़ का फ्रेश है, 877.5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है. फ्रेश इशू में 500 में से 310 करोड़ टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट. बुक्स पे कुछ 450 करोड़ टाइप का डेट है. आई गेस उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा है. लॉन्ग टर्म डेट आई गेस 380 ही है. तो
It will come down by a good margin, 25-30 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग होगा इन द कमिंग ईयर. बाकी जो 190 करोड़ है इन्होंने रखा है फॉर इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. अभी इनका 1377.5 करोड़ के अलावा 560 करोड़ का अनदर सेकेंडरी हुआ, तो टेक्निकली आईपीओ 1930 करोड़ का ही हो गया है, लाइक इन द रियलिटी नॉट. सो इन टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट वन स्मॉल फैक्ट, 2025 का ये पहला आईपीओ है जिसका आईपीओ का साइज डीआरएचपी से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है. DRHP is 1085 crores. In reality, it is 1377, which is like 30% more. और this is without taking the secondary. Secondary लिया तो फिर तो 85% ऊपर चला जाएगा. अभी आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे. FY23 the company did a revenue of 419 crores and a net loss of 16.9 crores. 10.5% का EBITDA margin था. In FY24 the company did a revenue of 872 crores with a PAT of 91 crores. 117% का revenue jump. And EBITDA margin at 19.8%. In FY25, the company did a revenue of 1,296 crores. PAT was at 135 crores, 50.4% revenue increase. EBITDA at 266 crores, 20.7% का EBITDA margin. Q1 में देखो तो 357 crores 357 crores का टॉप लाइन है, 43.3 crore का पैट है, 22% का EBITDA मार्जिन है. रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29%, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, टॉप 15 प्लेयर्स में. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.45, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है. सो आपको एक चीज बता दूं, तो ये भी बिजनेस Q4 हैवी होना चाहिए मोस्टली. सो 32 to 33% ऑफ इट्स एबिटा कंट्रीब्यूशन, वन थर्ड कम्स इनटू Q4. इसका एक और रीजन ये भी है कि जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाते हैं उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू का बम्प अप होते जाता है. सो इफ यू जस्ट लुक एट कि FY25 एंड में कितना इनका था, सो इट वाज एट 62 प्रोडक्ट्स, नाउ दे आर एट 81 विद इन फर्स्ट 5 months. तो आप समझो कि ये जो ऊपर के आपके न्यूज प्रोडक्ट है ये सारा कंट्रीब्यूट करेंगे इन द 26. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विल ग्रो एंड द न्यू पीतमपुर फैसिलिटी विल आल्सो help in increasing the efficiencies and some another approved geography to manufacture products. अब इनका FY26 का मैं बात करूं, so this has been done out of like rough hypothesis. 1700 से 1750 करोड़ का टॉप लाइन हो जाएगा, 220 से 230 करोड़ का पैट हो जाएगा, जो अभी अप्रॉक्स 130 है. और इसका है ना एक छोटा चीज देखो कि यार आप एबिडा के अंदर भी दो चीजें है, वन इज प्री R&D, वन इज पोस्ट R&D. प्री R&D 550 करोड़ का एबिडा है एंड पोस्ट R&D 365 करोड़ का एबिडा है. सो जस्ट लुक एट लाइक प्री R&D एबिडा टू मार्केट कैप इज लाइक द चीप. तो अभी ना इसका इसका रिस्क बता देता हूँ, फिर मैं आपको यूएस वाली चीज बता दूंगा. इसके अंदर मैं कुछ एक दो अच्छी चीजें वो बताता हूँ. फर्स्ट इज 99%, 98.8% प्रिसाइजली यूएस से आता है, दैट्स अ रिस्क. सेकंड, टॉप 5 कस्टमर्स. सो कस्टमर्स के अंदर इट शुड नॉट नेसेसरी बी कस्टमर्स, इट कैन बी द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो, दैट अकाउंट फॉर 73% ऑफ द रेवेन्यू. बट यस, एनी चेंज इन टर्म्स कैन हैम्पर द बिजनेस. एक 40 करोड़ का टैक्स लिटिगेशन कंपनी, बाकी सब तो बहुत ही छोटे, मतलब 68 केसेस है. ये एक है मटेरियल है, मैंने इसको बहुत डिटेल नहीं पढ़ा है, बट देयर अ केस. एक और चीज है, यूटिलाइजेशन इनका लो है, 40-50% ब्लेंडेड है, और नया अभी अक्वायर करा है तो वो और कम हो जाएगा. एंड होपफुली, बट देयर इज वन मोर थिंग, यार इतने कम यूटिलाइजेशन पे कंपनी इतना जबरदस्त मार्जिन कर पा रहा है, तो ज्यादा करेगा यूटिलाइजेशन तब कितने जाएंगे मार्जिन. उसके बाद वन मोर योर इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क, एफडीए का पिछले 11-12 साल में तो तंग नहीं किया है, बट कब कुछ हो जाए या के मतलब कुछ कर दे तो दैट वुड बी अ रिस्क. उसके बाद सो अभी इनका आता है मेन यूएस पे, ठीक है. तो इज यूएस अ रिस्क, वो जो आपको टैरिफ का लगा था, तो जस्ट लुक एट द किस पे लगा है, दैट इज ऑन ब्रांडेड जेनरिक्स एंड दी सीडीएमओ कंपनी, ये आपका औरोबिंदो वगैरह टाइप्स कंपनीज, ठीक है. तो दिस कंपनी इज कंप्लीटली इनटू नॉन ब्रांडेड जेनरिक्स, तो इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगता है, फर्स्ट. सेकेंड, मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड वी हैव गॉट enough things in the US ki in case there is something, we can operate from the Canada and the US from there also, because we already made that ecosystem और हमारा contract manufacturer के साथ tie-ups हो चुके हैं from a long time, so we don't see any kind of a issue. और इसमें एक अच्छी बात है US related, one is your, if you know, yesterday the US Biosecure Act was passed. So what this means, जो आपके यूएस की कंपनीज है अभी, लाइक वुक्सी फार्मा टाइप्स के, विच इज लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीडीएमओ सीआरडीएमओ कंपनीज. टॉप 5 में से जो 3 कंपनीज, वो 2 कंपनीज है वो यूएस की है, एक यूरोपियन है, एंड बाकी यूएस की एक कंपनी, और एक और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई गेस वन इज अ जापानीज कंपनी. तो
जो वुक्सी फार्मा टाइप के प्लेयर्स है, इफ यू नो, आई गेस हाई सिंगल डिजिट ऑफ द वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय दैट कंपनी. तो इन जो दो जायंट्स पे बैन आ जाएगा, सो द इकोसिस्टम और द सप्लाई चेन विल मूव ऑन फ्रॉम योर चाइनीज कंपनीज टू द इंडियन कंपनीज. और जो इंडियन कंपनीज आर ऑलरेडी देयर, दे वुड गेट मोर पुश टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स. क्योंकि यू जस्ट थिंक ना, इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन के अंदर आपके कंपीटिटर्स खाली चाइनीज ही हो सकते हैं. बिकॉज योर जॉनसन एंड जॉनसन ऑफ द वर्ल्ड नहीं आने वाले आपको टू कम्पीट इन दोज काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन. जब बिग यूएस की कंपनीज होते हैं ना, दीज गाइज टारगेट the mass premium kind of portfolio, जहाँ पे margins would be better with very big TAM. ये जो generally इनके जो like even Senoris was one of those companies, not Senoris, and this has got very less relation, but just I'm trying to tell on the product mix. That company used to target जहाँ पे कम competition है but अच्छे margins है, and this guy has got very special and complex formulations. तो यहाँ पे कंपटीशन इज वेरी, जस्ट थिंक ना, आपके मेरे पोर्टफोलियो के 62 में से 9 प्रोडक्ट्स का 25% प्लस मार्केट शेयर है, और 15 प्रोडक्ट में मेरे को खाली एक या दो ही कॉम्पिटिटर है. जस्ट थिंक, आइदर इट इज कॉम्प्लेक्सिटी, आइदर इट इज लोअर टैम नॉट ब्रिंगिंग द लार्ज कंपनीज इनटू द बिजनेस. So I feel when due to this Biosecure Act, आपके जो Chinese players है, those will be mostly will be out of the markets. अभी उनके भी वो वाया एक्सपोर्ट करने के तरीके होते हैं, but just think it is not very easy क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है. It is not easy for the US ecosystem to take these kind of exports. So ये एक और चीज है. अभी इसका एक एक आपको मैं कैप टेबल बताता हूँ, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दो. सो द प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक ओन्स 52% बिफोर द आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 35% पे आ जाएंगे वो. अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसके अंदर जो सबका होमवर्क है आज. 14% इक्विटीज ओन बाय प्रोफेसर शिवानंद मानकेकर. आप इनके बारे में जाके पढ़ना, ही आपको होमवर्क है. आपको कुछ बढ़िया मिलेगा एंड इट वुड बी वर्थ योर रीडिंग टू अंडरस्टैंड हु दिस गाय इज एंड हाउ मच ही ओन्स 14%. ही वाज अ टीचर ऑफ मिस्टर उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर. जस्ट रीड रिगार्डिंग दिस पर्सन. सो बॉटम लाइन फॉर मी हियर इज, इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल अप्लाई करना है, और देयर शुड बी नो सेकंड थॉट कि मेरे को इसको अप्लाई नहीं करना है. Like, I get those Sai Life and Anthem kind of vibes. This is going to be an extremely, extremely hot IPO for the institutions. Like, very fine company. तो इसको दबोच लेना है सीधा, कुछ सोचना नहीं, बिंदास अप्लाई करना है इसके अंदर. कोई यूएस का चक्कर नहीं है, सब बोल रहे हैं ट्विटर पे, कोई नहीं, बिंदास डालने का इसमें. सो आई एम हेवी वेट बुलिश ऑन दिस कंपनी. अगर मुझे 20-30% पे मिल जाए, आई वुड लाइक टू गिव इट 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर श्योर. So, like, heavyweight apply from my end. Got it. Thank you. काफी ज्यादा comprehensive and heavy in terms of like your review. But who are the peers of the company and how are you looking at the valuation? No peers in India. आसपास भी नहीं कोई. तो कैसे करना है इसका valuation? मैं इसको दो एक मिनट, आई फील देयर सम इकोइंग. तो मैं इसको किस तरीके से देखता हूं, आई टेल यू. फर्स्ट इज ऑब्वियस पैट लेवल पे, इसको FY 26-27 पे देखना पड़ेगा ना मोस्टली, बिकॉज 27 मेरे को इसमें क्लियर दिखता है कि यार ये 300-350 करोड़, 325 टाइप का पैट कर देगा, तो उसके ऊपर 22-23 टाइप्स पे है, विच इज रीजनेबल. बट मैं उसको एक अलग मेट्रिक पे देखता हूँ यार. जस्ट थिंक, जो इनकी जो पियर्स है ना, इनका R&D होता है साल का 4%, ये बंदा करता है 11%, 10%, 12%, पहले तो 18 भी किया करता था. इट्स नॉट कि इन्होंने R&D एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इनका रेवेन्यू 3 गुना हो गया. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू लुक एट. तो इफ यू जस्ट लुक एट इनका FY 26 प्री R&D का EBITDA, दैट इज एट लाइक 550 करोड़. 550 करोड़ का प्री R&D EBITDA है, उसके ऊपर 7-8 हजार करोड़ वाले से ना, कुछ भी नहीं, बड़ा सस्ता है यार ये. कैश फ्लो देखो, सॉलिड बैंक बैलेंस. साल का FY 25 में कुछ 120 करोड़ टाइप का कैश जनरेट किया है. ऐसा नहीं कि खाली पैट बना, मतलब ऑन बुक्स पैट है, असलियत में भी पैसा बना रहा है. क्वालिटी ऑफ द बिजनेस इज रॉक सॉलिड. तो मैं उसको ना इनके लेवल पे देखता हूँ मैं, लाइक अब इट 20% डिस्काउंट टू योर साई लाइफ एंड एंथम ऑफ द वर्ल्ड. तो यार ये आपका एकदम रिचली वैल्यूड फार्मा कंपनी विच वुड बी सुपर हॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू. इस तरीके से मैं इस कंपनी को देखता हूँ. सो
it is not easy to value this company, but I feel, like I can, मेरे को 1.5 साल में दुगना दिखता है ये. So that is what my point of. So I've done some back calculations. इस कंपनी के बारे में और बहुत सारी चीजें जो और डिस्कस नहीं करने में अच्छा ही है. So like all are on positive note for sure. So I would request everyone to read it from their own leisure. आप खुद पढ़िए इसको. You would find this company very interesting. Like when this IPO came, by the way, this came out of surprise. ठीक है, ये IPO आने वाला था, no one knew. इसका आप देखो कोई ढंग का इंटरव्यू भी अवेलेबल नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं, मतलब प्रमोटर्स वांट कि इसकी हमारी कंपनी किसी को पता ना. जस्ट लुक एट, लाइक आईपीओ अचानक से आ जाता है, कोई इनविटेशन नहीं आता है, कोई एंकर की पिचिंग नहीं हो रही है, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा है. सो दिस सेज कि देयर इज समथिंग रिगार्डिंग दिस कंपनी. सो इसको वैल्यू कैसे करना है, मैं शायद इसको कल, लाइक इन माय थीसिस आई वुड बी कवरिंग. अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया, बट जो मुझे दिख रहा है मुझे बड़ी सस्ती लगी कंपनी. एंड लोग बोल रहे हैं कि भाई 20 का पी है सन फार्मा का, ये 40-50 पे आ रहा है, बड़ा महंगा है. अब मत लगाओ यार, आपकी मर्जी. Got it. Perfect. Thank you then. It makes the job easier. I know कि इसमें premium भी है and LG का पैसा unblock हो जाएगा, right? Monday, so you can always use यस the यस money यस, back in. करेक्ट है, हो जाएगा. जो आपका पैसा है एलजी का, वो इसके अंदर आ जाएगा. Got it. So would be applying to this IPO. बाकी देखते हैं क्या होता है. That is with respect to those three IPOs that we have covered. Just to highlight, for me it's a simple choice. I would be avoiding the two Canara brothers because I don't like the sector. Second, I like AMC sector, but I don't like the specific company in that sector. Rubicon, I'll be applying. I have money from LG allotment. Mostly unblock किया है मेरे लिए भी, much below the expected subscription number, but at least I have got something. तो देखते हैं क्या होता है. But yeah, that is what I am going to do. Tanmay, what's your strategy? वही है यार, रूबिकॉन लगाएंगे दबा के. मेरा तो पूरा ही अनब्लॉक कर दिया, मतलब एक रिटेल भी फेंक के नहीं मारी मेरे को रजिस्ट्रार ने. तो आई एम बी वेरी सैड यार विद द अलॉटमेंट. तो ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग यार, जो मैंने बोला है ना होमवर्क, ये जो महाशय ना शिवानंद जी, उनके बारे में पढ़ना है आपको, जाके मजा आएगा आपको पढ़ के. Got it. And there are still a few questions with respect to tariff, Trump tariff, pharma tariff. Is that not impacting Rubicon or anything ना that ना, you have to add on that before we less kind of than close the less space? than 5% impact I would say. So actually honestly zero है, but we know कि वो एक रात में कुछ भी कर देते हैं ट्रम्प साहब. So I don't want to underestimate him, but नॉन ब्रांडेड में तो अभी तक कोई भी टैरिफ नहीं है. इट इज नॉट ब्रांडेड जेनरिक्स एंड योर औरोबिंदुस वगैरह टाइप ऑफ बिजनेसेस. Okay, perfect. That is with respect to today's space. Thank you so much, everyone, for joining. We will see you back next week. Thank you. Bye. Thank you.